Welcome, sir, and welcome to all the media friends and distinguished guests to this curtain raiser briefing on World Food India 2023. On this occasion, on behalf of PIB, I would like to welcome Shri Pashupati Kumar Paras, Honorable Union Minister of Food Processing Industries. Welcome, sir. Shri Prahlad Singh Patel, Honorable Minister of State for Food Processing Industries and Jal Shakti. Welcome to you, sir. Shrimati Anita Praveen, Secretary, Ministry of Food Processing Industries. Welcome, ma'am. Shri Minaj Alam, Additional Secretary, Ministry of Food Processing Industries. Welcome to you, sir. Shri Harsha Agarwal, Vice President, FICCI, and Shri Shailesh Pathak, Secretary General, FICCI. Welcome to you, sirs. Now we will begin the program. First, I would like to request Mr. Harsha Agarwal to make his opening remarks. On behalf of Federation of India Chamber of Commerce and Industry, it's a great pleasure to welcome Shri Pashupati Kumar Paras, Honorable Union Minister of Food Processing Industries, Government of India, Shri Prahlad Singh Patel, Union Minister of State for Food Processing Industries and Jal Shakti, Government of India, Srimati Anita Praveen, Secretary, Ministry of Food Processing, Government of India, Mr. Minhaj Alam, Additional Secretary, Ministry of Food Processing Industries, Mr. Satyendra Prakash, Principal Director General, Press Information Bureau, Mr. Shailesh Pathak, Secretary General, FICCI, representatives from Foreign Missions of India, delegates from industries, senior officials from Ministry of Food Processing Industries and allied departments, delegates from media, ladies and gentlemen. At this curtain raiser program to unveil the second edition of World Food India 2023. At the outset, FICCI is honored to be associated with Ministry of Food Processing India as national event partner for this prestigious event. Honorable Minister, sir, we are indeed honored and humbled by your presence in our midst today. India is the fastest growing economies in the world and offer many investment opportunities, especially in the food processing sector. The Indian food processing sector is growing with an annual growth rate of 8.3%, and its output is expected to reach $535 billion by year 25-26. We are the largest producer of milk, pulses, spices, millets, and livestock in the world, and the second largest in total food production. As we are all aware, the food processing sector in India has undergone several reforms since 2014-15, as the Government of India has accorded the food processing sector in India as high priority status with the overall goal of establishing India as the food basket of the world. The Atmanirbhar Bharat package of policies and financial measures for the agriculture and food processing sectors have laid the groundwork for promoting global outreach, bolstering the agriculture and food processing sectors in the nation, and serving as a model to establish the Indian economy as self-reliant and self-sustaining. The Government of India has taken significant steps to unleash huge potential of food processing sectors with many flagship schemes like Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana, Pradhan Mantri Formalization of Micro Enterprises, production-linked incentive schemes, leading to overall development and growth of sub-sectors across the entire value chain. India, with population base of over 130 crores, with rising disposable income, rising spending on food and consumer goods, and a rapidly growing food retail market, with acceptance of various global cuisines, have established India as a global hub for food processing as well as food supply. Today, the possibilities for raising food processing levels are endless,
as India transitions from a position of scarcity to one of surplus in terms of food production. Now it's time to act and realize the full potential of the industry, giving its future potential, growth potential, and significance in India's economic and social perspective. The second edition of the World Food India is being organized with an objective to promote investments in the diverse India food processing sector and also to celebrate year 2023 as the International Year of Millets. The key pillars of WFI this year are millets, establishing India as manufacturing as well as export hub, innovation and sustainability, White Revolution 2, Blue Revolution, and technology and digitization. The global convention will witness participation of international countries, global CEOs of major food companies, state governments, stakeholders from Indian food processing ecosystem across the value chain, participation of allied ministries and government institutions, startups, etc. With this, we look forward to your participation and support in making the World Food India a successful event. Now I request Sri Shailesh Pathak, Secretary General FICCI, to make the presentation on World Food India 2023. Thank you. धन्यवाद धन्यवाद हर्षी माननीय पशुपति कुमार पारस जी, माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी, माननीय अनीता प्रवीण जी, dignitaries on the dais, ladies and gentlemen. This is a very short and crisp presentation, but I wanted to begin by saying कि हमारे जो मीडिया के मित्र हैं उनको एक पैक्ड लंच मिलेगा इस कार्यक्रम के बाद, और उसमें ड्राई मिक्स वेजिटेबल रहेगा, शाही पनीर, दाल तड़का, राइस, चपाती, बाजरे की खिचड़ी, श्री अन्न, सलाद, दही तथा मीठा, मिलेट्स का श्री अन्न रहेगा. आशा ये है कि ऑल ऑफ अस आर कंज्यूमर्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग, और आशा है कि पैक्ड लंच आपका अच्छा रहेगा. बट आज से ठीक 238 दिन बाद ये वर्ल्ड फूड इंडिया माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इनॉग्रेट किया जाएगा प्रगति मैदान में. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज जी. 3 से 5 नवंबर, 3 से 5 नवंबर अभी अपने मोबाइल फ़ोन में कैलेंडर में सेव कर लीजिएगा. प्लीज़ सेव इट इन योर कैलेंडर्स. सो आई लेट यू रीड व्हाट इज़ ऑन द स्क्रीन. आप पढ़ना चाहेंगे, लेकिन गौरतलब बात यह है, उल्लेखनीय बात यह है कि द फर्स्ट एडिशन ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया हैपेंड इन 2017, दैट 6 years ago, 2017 में. और किसी भी इंडिकेटर में 2017 से 2023 इन द लास्ट 6 years यहाँ से यहाँ पहुँच गए हैं हम फूड प्रोसेसिंग में, और इसी को शोकेस करने के लिए वर्ल्ड फूड इंडिया हो रहा है. आप नीचे देखेंगे पॉलिसी राउंड टेबल्स करीब 20 से 25 होंगे, 50,000 स्क्वायर मीटर का एग्जीबिशन होगा, 15 थीमेटिक सेशंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स एंड कंट्रीज फ्रॉम ऑल ओवर द ग्लोब. फूड स्ट्रीट राज्यवार स्टेट वाइज रहेगा, और 7 कैटेगरीज ऑफ स्टार्टअप अवार्ड्स रहेंगे. नेक्स्ट प्लीज. माननीय प्रधानमंत्री जो द्वारा उद्घाटन किया जाएगा 3rd and 5th नवंबर. इसमें 5 तरीके से आप भाग ले सकते हैं. यू कैन प्रेजेंट, यू कैन प्रमोट, यू कैन बूस्ट, यू कैन एक्सप्लोर एंड यू कैन शोकेस. हु शुड पार्टिसिपेट? और हमारे मीडिया के मित्रगण जो हैं वो इन सभी वर्गों को बता सकते हैं. हु शुड पार्टिसिपेट? पीपल हु वांट टू लर्न अबाउट फूड प्रोसेसिंग, who want to showcase the good work that they are doing, जो पैसा लगाना चाहते हैं, the people who want to invest, and people who want to network with best practices across the world. Just before going to the next slide, I was asking some people from the food processing industry, what are the 2 things you want to be said? And I can see them in the audience. Number 1, they said there's a $10 billion export potential. कितना निर्यात हो सकता है food processing से? और number 2, it is all about value addition. कितनी हम वृद्धि कर सकते हैं हमारे अनाज में. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ये हमारे की पिलर्स रहेंगे, जो श्री अन्न, जो माननीय वित्त मंत्री जी ने भी बोला था, मिलेट्स, और आज के लंच में भी आपको मिलेगा. ग्रीन फूड्स, और ऑफ कोर्स वाइट रेवोल्यूशन एंड ब्लू रेवोल्यूशन, यानी डेयरी प्रोडक्ट्स और मछली, एंड ऑफ कोर्स हॉर्टिकल्चर एंड लाइव स्टॉक.
इंडिया एज एन एक्सपोर्ट हब, जो हमारे इंडस्ट्री के मित्रों ने कहा, एंड अबव ऑल जो भारत सरकार की एक नीति है कि हर चीज़ में तकनीक और हर चीज़ में डिजिटलाइजेशन किया जा सके, वो हमारे फूड प्रोसेसिंग में भी होगी। की एलिमेंट्स क्या रहेंगे? नेक्स्ट स्लाइड। सो एग्जीबिशंस होंगे, कॉन्फ्रेंसेस, नॉलेज सेशंस, country, I can see some international delegates here, and state sessions, industry roundtables. Ultimately, FICCI is the voice of Indian industry, और हमारे इंडस्ट्री मेंबर्स को और क्या चाहिए? सरकार से उत्साहवर्धन और समर्थन। B2B, B2G and G2G, business to business, government to government, and business to government meetings. Next, please. इसी तरह से digital showcasing on new innovations and what are the achievements जो भारत सरकार ने किया है, one district, one produce and न्यूट्री सीरियल्स जो हमारी सुपर फूड्स की बात होती है, फिर फूड स्ट्रीट, ये स्टार्टअप चैलेंज, बायर सेलर मीट्स एंड 7 कैटेगरीज में स्टार्टअप के अवार्ड्स। नेक्स्ट प्लीज। I'll let you read this. A lot of sessions during the World Food India program. But there's something here for everyone. I hope all of you, from the 3rd to the 5th, come in and taste the savories on offer. 2017 में जो वर्ल्ड फूड इंडिया हुआ था, उसके कुछ फोटोज़ हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के, और अगला आप देखेंगे जो प्लेनरी सेशन था और राउंड टेबल। इसी तरह से इंटरनेशनल डेलीगेट्स वर देयर इन वर्ल्ड फूड इंडिया 2017. We hope to see even more international delegates in 2023. And the final slide is, this is the kind of international participation that we had in World Food India 2017. I'm confident that with all of us working together, it will be even better in 2023. Thank you very much. Dhanyavad. Thank you, Mr. Pathak. And now I would request Secretary Ma'am, Srimati Anita Praveen, to make her opening remarks. Thank you. Am I audible? Yeah, okay. माननीय फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर श्री पशुपति कुमार पारस जी, माननीय राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, आई थिंक अब आ रही है आवाज? चलिए मैं पास हो जाती हूँ। That doesn't move. Okay. माननीय फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर श्री पशुपति कुमार पारस जी, माननीय राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, our representatives from the state government, excellencies, and industry representatives who have found time to come and participate in our happy event. Shri Minhaj Alam, Shri Shailesh Pathak, Secretary General FICCI, Shri Harsh Agrawal, Vice President FICCI, Mrs. Mattu JP Singh, ADG PIB, मेरे मंत्रालय से शरीक अधिकारीगण, कर्मचारीगण, and most important members of the media, ladies and gentlemen. अपनी बात को आगे बढ़ाने के पहले मैं एक छोटा सा सुधार पाठक जी की स्टेटमेंट में करना चाहूँगी. We have requested the Honorable Prime Minister's participation in inaugural, but the confirmation is still due, so please do not print. That is my request. We will await confirmation, and thereafter, if we are lucky, हमारा सौभाग्य होगा अगर हमें इस पर confirmation मिल जाती है और माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे इवेंट में आ पाते हैं. किंतु अभी ये स्टेटमेंट देना थोड़ा प्रयास कर रहे हैं हम लोग, और उम्मीद करते हैं कि इसमें हमें सफलता मिलेगी. प्रयास किया जाएगा और निश्चित रूप से वो आएंगे. जी सर. तो इस विशेष अवसर पर मैं थोड़ा बहुत अपने इवेंट के बारे में और थोड़ा मंत्रालय की जो हमारी स्कीम्स हैं उनके बारे में बताना चाहूँगी. The World Food India is envisaged as a flagship event. और जब मैं ये flagship event बोल रही हूँ तो ये मेरा लक्ष्य है, हमारे मंत्रालय का ये लक्ष्य है, हमारे मंत्रियों के सपोर्ट से हमारी ये उम्मीद है कि ये इवेंट इतना सक्सेसफुल हो जाए कि ये हर साल हम कर पाएँ, ऐसा हम उम्मीद करते हैं.
2017 में एक एडिशन हुआ था. पिछली बार जब हमारे यहाँ ये इवेंट हुआ था तो बहुत ही सक्सेसफुल हुआ था और हम उम्मीद करते हैं कि हम उससे बहुत ही ऊपर, उससे बहुत ही बेहतर कर पाएँ. Last time we had 75,000 business visitors from over 65 countries with representation of 11 international business chambers, 25 ministers from 18 states, 9 ministerial delegations, and the event also facilitated over 8,000 online and offline B2B meetings. So this kind of gives a picture of how successful the event was. The World Food India 2023 will follow the footstep of the success of the 2017 event and will provide a unique platform to all the stakeholders related to food processing, including raw material producers, food processors, equipment manufacturers, logistics and cold chain players, technology providers, academia, startups, food retailers, etc., to interact and showcase their respective strengths. The event will host senior government dignitaries, global investors, and business leaders of major global and domestic food companies. It is my strong conviction that the event will provide a global platform to showcase and highlight India's potential to be an export hub. हम हर एरिया में एक्सपोर्ट हब बनने की बात करते हैं. अब ये समय आ गया है कि फूड प्रोसेसिंग, जिसमें हमारा बेस मटेरियल काफ़ी है, thanks to all the other ministries, the fisheries, agriculture, animal husbandry having contributed to growth in base material. अब value addition का काम जो है वो हमारे मंत्रालय के पास आता है. And India's potential to be an export hub for processed food as well as processed and packaging machinery to the world. मैं ये इसके साथ जोड़ना चाहूँगी कि we should actually be adding not just processed food, but we should not rely for other things like machinery as well as packaging material on other countries. हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए कि हम एक holistic approach के साथ इस काम को करें. I will highlight a few themes or pillars that have been identified for the event. Pehla, I'm sure the list has been given by Vicky, so I'll just elaborate a little bit. The first one is the millets या श्री अन्न, the superfood of India. हमारे पिछले जनरेशन में लोग घर में ये रूटीन में खाते थे. अब स्थिति ये आ गई है कि हमें इसको पॉपुलराइज करने की आवश्यकता पड़ रही है. तो this event will highlight India's strength in millet production and the need for imbibing millets into the daily culinary preferences globally, not just for India. We look forward to this happening for the world as a whole. And since we are largest producers of millets, we look for the potential of high value addition being done in the country and also capturing the international market here. The second pillar of the event is going to be the innovation and sustainability green foods, apart from being India as export hub. And for innovation in sustainability green foods, this will focus on linking food processing sector with climate resilient and food security, reducing carbon footprint, a sustainable blue economy towards which government is seriously working towards, and circular economy by embracing sustainable solutions for all components. This pillar assumes great importance in the backdrop of India's commitment to drive sustainability initiatives through its G20 presidency as well as the upcoming COP28. The pillar of technology and digitization is where we look forward to large contribution coming from our country. On the IT sector, we've worked enough and we have really contributed greatly to the service sector's GDP. Now it's our time to add to that income that comes to the country. And we will provide platform for exploring opportunities presented by advanced technology like Web3, Internet of Things, AI, blockchain technology, and 3D printing throughout the processing chain, value chain in India. We have two technical institutes, NIFTM Kundli and NIFTM Tanjavur, who would be working on this area in particular and to create a lot of pioneering works that can later on be also shared with the world at large. White Revolution is the last pillar that we are going to work on, the White Revolution 2.0, which will seek to enhance private sector participation in the dairy industry of India, fostering the adoption of advanced technology, genetics to improve the quality of processed output, and product diversification, enabling seamless integration of Indian dairy sector with the global value chain. At this point, I cannot help but throw some lights on the true potential of Indian food industry. It makes me immensely proud to state that India is first in dairy production and second in horticultural crop globally.
The Indian food processing sector has grown rapidly with an average annual growth rate of 8.3% in the last 5 years. The fact that sector employs 12.5% of the workforce in the registered manufacturing sector is a standing testament to true employment generation potential of the sector. The sector has attracted over $6 billion worth of foreign direct investment since 2014-15. The percentage share of processed food exports in agri-food exports stands at 22.6% as of 21-22, and we look forward to increasing this number manifold rather than exporting just grain or base material from all the allied sectors. These figures are encouraging and highlights the true potential of India's food processing sector. Now I would like to highlight three major schemes that the government is running from the Ministry of Food Processing sector, which have had very good results as far as our sector is concerned. The first being Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana. This accelerates growth in this sector through creation of modern processing infrastructure. The ministry envisages to support creation of strong infrastructure for food processing throughout the country in a demand-driven manner. The next is Production-Linked Incentive Scheme, which aims at creating global food processing champions in India and provides financial incentives to modernize and enhance the competitiveness of the food processing industry by manufacturing specific categories of food products that have high potential for growth in output and value addition. It gives me great pleasure to add that we do not just promote big industry, हम मिलेट प्रोड्यूसर्स को भी इस स्कीम के अंतर्गत सपोर्ट करते हैं और हमारे साथ 30 इंडस्ट्रीज़ जिसमें से 8 बड़ी हैं और 8 बड़ी industries of these 30 are large producers and the rest 22 are MSMEs. So that's a great achievement. I particularly take a lot of pride in, because millets, we started this work even before the International Year of Millets started, and last year itself we have given approvals to these companies to become part of our growth story. In addition to assisting the medium and large industry, the ministry also assists micro food processing units, SHGs, cooperatives, etc., to bring about their sustainable growth under the Prime Minister Formalization of Micro Entrepreneurs in Food Processing, which is the PMFME scheme. I have highlighted some strengths of food processing sector and initiatives taken by the ministry to drive the point that an event like World Food India 2023 will have enough achievements of food processing sector to showcase and also build base to work for further growth of the sector. Taking forward the high achievements of agriculture, fisheries and animal husbandry sector, the food processing sector paves way for value addition of products right from the primary processing level to the finished products. The potential is tremendous, and we can work towards building strong value addition along the entire value chain to bring maximum benefits to all concerned. This event will be a step towards showcasing India's strength in food processing in the world. My colleagues and I are overseeing the preparations for the World Food India 2023 under the guidance of the two honorable ministers, and have engaged with all the stakeholders, industry leaders, state governments, private sector companies, as well as representatives of foreign governments to make World Food India 2023 a great success. On behalf of the ministry and my esteemed colleagues, I thank you once again for joining us on this momentous occasion of the Curtain Raiser event of the World Food 2023. Together, we can make this event a success. मैं मंत्रियों को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगी जो हमारे प्रोत्साहन के लिए यहाँ आए और हमारे अनावरण के कार्यक्रम को इन लोगों ने अपना समय दिया। इसके लिए मैं इनका विशेषकर धन्यवाद करना चाहूँगी। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। Thank you, ma'am. And now I would request Honorable Ministers, Shri Pashupati Kumar Parasji and Shri Prahlad Singh Patel ji to launch the website. Ma'am, it was, the launch was first opening? Okay. Okay. The World Food India website would help navigate users about the event and about the Ministry of Food Processing Industries. It will also showcase detailed information
about the partners and the sponsors. Brochure. Thank you, friends, for this small presentation about the website. And now I would request Honorable Minister Sirs to release the brochure of World Food India 2023. And now can we have the promotional video, please? India has made a prolific journey from farm to fork, combining the traditional and the modern, ready for now and the future, processing to become the food basket of the world. The stage was set with World Food India 2017. With 61 countries, 75,000 business visitors, 36 conferences, 8,000 B2B meetings, organized by the Ministry of Food Processing Industries, Government of India. Now aiming for the sky with World Food India 2023, a flagship event. India, a land of advantages. 5th largest economy. One of the fastest growing economies. Propelled by one of the champion sectors, the food processing industry. With an annual growth rate of 8.3%. 100% FDI is permitted under the automatic route in food processing industries in India. 100% FDI under government approval route is allowed for retail trading, including through e-commerce in respect of food products manufactured and or produced in India, leading to over $6 billion worth of FDI since 2014-15. Today, the food processing industry employs 12% of the total workforce in the registered manufacturing sector. India is the largest producer of milk, spices and pulses. Second largest producer of horticultural crops, with 23 operational mega food parks, 12 integrated agro-processing clusters, 271 integrated cold chains, supported by policies and initiatives, and an enabling food regulatory framework ensuring safety and quality. Accelerated by a robust infrastructure, more than 140,000 kilometers of national highways, 12 major and 213 minor ports, 128,305 kilometers of railway track, Gati Shakti, an integrated solution for movement of people, goods and services from one mode of transport to another. National Single Window System, a single portal enabling ease of doing business. A revolutionary payment gateway. A glorious opportunity for investment. World Food India 2023 will have focused key pillars. Recognize green food for a greener tomorrow with a focus on sustainability. Driving the White Revolution 2.0. Technology and digitization, fostering innovation and R&D. Establishing India as an export hub. Evolutionary development of India's fisheries sector through sustainable and responsible Blue Revolution.
This mega event will see participation from the champion sectors with round tables, exhibitions, thematic sessions, B2B, B2G, G2G meetings, food street, buyer-seller meets, startup awards. Come and be a part of World Food India 2023. And now I would request Honorable Minister of State for Food Processing Industries and Jal Shakti, Shri Prahlad Singh Patel, to make his special address. Over to you, sir. हमारे मंत्री आदरणीय पशुपति पारस जी, सचिव श्रीमती अनिता प्रवीण जी, फिक्की के सेक्रेटरी जनरल श्री शैलेश पाठक जी, फिक्की के उपाध्यक्ष श्री हर्ष अग्रवाल जी, हमारे अवर सचिव श्री मिनाज आलम जी, पीआईबी के सभी अधिकारीगण, मीडिया के सभी साथी, हमारे मंत्रालय के सभी अधिकारी और कर्मचारीगण, हमारे अतिथि जो भी राजदूत यहाँ पर उपस्थित हैं, सबका मैं मंत्रालय की तरफ से आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 हम 2017 के अनुभव के साथ और एक ऐसी परिस्थिति में जब G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, उसके साथ हम 2023 में पूरी दुनिया के सामने हम एक बेहतरीन प्रयास के साथ और संकल्प विश्वास के साथ में प्रस्तुत होने वाले हैं। मैं एक बात और जोड़ूंगा कि जो 5 पिलर्स हमारे दोनों वक्ताओं ने बताए हैं, मैं सिर्फ उसको पुनरावृत्ति कर रहा हूँ। सुपर फूड ऑफ इंडिया मिलेट्स सिरियन दुनिया की मांग की पूर्ति के आधार पर सामर्थ्य के साथ हम दुनिया के सामने खड़े होंगे, ये हमारा संकल्प है। दूसरा है कि हमारा संकल्प है कि हम निर्यात का हब भारत को बनाएं। तीसरा है कि हम ग्रीन फूड की बात करते हैं, लेकिन नवाचार और स्थायित्व के साथ हम दुनिया की मांग की पूर्ति के वाहक बने। चौथा है कि हम दूध में अग्रणी हैं, लेकिन श्वेत क्रांति 2.0 के आधार पर हम उससे भी ऊंचाइयां छूने का काम करें। और पांचवा है डिजिटलाइजेशन। मैं अगर मिलेट्स की बात करता हूं तो मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, लेकिन मिलेट्स के लिए दुनिया के सामने जो उन्होंने प्रस्ताव रखा था वो दुनिया ने माना। हम 40% दुनिया का सिरियन पैदा करते हैं और उसके बाद आज जो दुनिया की स्थिति है उसमें प्रोसेस फूड पहुंचाकर हम दुनिया की ज़रूरतों को पूरा करने का सामर्थ्य रखते हैं। ये संदेश इस फूड फेस्टिवल से जाएगा। लेकिन मैं 2-3 बातें ज़रूर कहूँगा कि ये सच है कि हमारे पास में सिरियन की अनेक प्रकार की हमारे पास में सिरियन है, लेकिन प्रमुख तौर पर जो कोदो, कुटकी, समा, रागी, जब हम इनकी बात करते हैं वो जो हमारे रीजनल स्टेट्स में उनके नाम है वो अलग है। लेकिन पहले कभी ये स्वीकार नहीं था, लेकिन दुनिया ने, जिस मेडिकल साइंस ने इसको स्वीकार किया कि आज जो दुनिया में जितने रोग हैं उनकी तुलना में सिरियन श्रेष्ठ भोजन है। हम एक समय भारत का सर्वोत्कृष्ट भोजन कहते थे, लेकिन दुनिया नहीं मानती थी। लेकिन साइंटिफिक पैरामीटर्स ने अब दुनिया को इस बात का एहसास कराया कि हमारे लिए बेहतरीन अवसर है। दूसरी बात आती है कि हम निर्यात का हब बनाने की बात करते हैं। ये सच है कि देश की आज़ादी के समय हम आयात करते थे, आज हम निर्यात कर रहे हैं, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो चावल हो, ये सच्चाई है। लेकिन ये तीसरा अवसर है वो मिलेट्स का है। लेकिन हमारे सामने 2 चैलेंजेस हमेशा रहे हैं, मार्केटिंग और ब्रांडिंग का, और दूसरा रहा है क्वालिटी पैरामीटर्स का। मुझे गर्व है कि भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की PLI स्कीम इस बात की जितनी भी कमियां थीं उनको दूर करती है। मार्केटिंग ब्रांडिंग में हम भारतीय कंपनियों को मदद पहुंचाने के लिए तत्पर हैं। और दूसरी तरफ मैं जो बात कहता हूं कि क्वालिटी पैरामीटर्स के लिए जो चेन और जो मैपिंग हमने फूड लैब के लिए की है, उस पर मंत्रालय भी गौरवान्वित है और भारत सरकार उसके लिए गर्व करती है। और मैं ये कहूँगा कि इन बातों के लिए जो भी लोग कारोबारी हैं, फिक्की जैसा प्लेटफॉर्म यहाँ पर है, देश की इंडस्ट्री हो, सरकार और कारोबार
दोनों के बीच में भारत सरकार की योजनाएं कड़ी के तौर पर काम कर रही हैं। ये एक हमारे लिए बेहतरीन अवसर है और मैं इस अवसर पर आग्रह करूंगा सभी कारोबारी साथियों से कि वो इन योजनाओं का लाभ उठाएं और इस हमारे फेस्ट में हम दुनिया को ये संदेश दें कि नहीं, हम में वो सामर्थ्य है कि हम जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा कर सकते हैं। तीसरा बिंदु है नवाचार का और स्थायित्व का, और वो ग्रीन फूड को लेकर है, चाहे वो प्लांट बेस्ड फूड हो या बाकी चीज़ें हों। लेकिन मैं नवाचार में एक उदाहरण देता हूँ, वो भी PLA स्कीम का। हमारा जो जैविक और इनोवेशन का जो सेक्टर है उसमें दूध पूरी दुनिया में उसकी मांग है, लेकिन बहुत सारे लोगों को दूध की एलर्जी थी, उससे बने हुए प्रोडक्ट वो खा नहीं सकते थे। लेकिन हमारे यहाँ ही एक नौजवान ने वो इनोवेशन किया और उसमें कोई एंजाइम मिलाकर ताकि वो लोग भी उस दूध के प्रोडक्ट को ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने ये बात आपको कही है। इसलिए मुझे लगता है चाहे वो इनोवेशन हो और चाहे वो जैविक क्षेत्र में हमारी पहल हो, ये बेहद ताकत के साथ हम दुनिया के सामने प्रस्तुत हुए हैं। और इसलिए मैं मानता हूँ कि इंडस्ट्री को, सरकार को मिलकर इन योजनाओं का लाभ लेकर हमको अपने स्टार्ट की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। चौथा पिलर है हमारा श्वेत क्रांति 2.0। हम लीडिंग हैं, दुनिया में नंबर 1 पर है, लेकिन उससे भी आगे जाने की इनोवेशन के साथ हमारे पास में अवसर है और मैं मानता हूँ कि हम इसमें ताकत के साथ में ऊपर जाएंगे, चाहे वो किसान संपदा योजना हो और चाहे PM FME हो। हम दोनों के मामले में मानते हैं कि प्रधानमंत्री ने समूह के तौर पर महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की हो, सोसाइटी में शामिल ऑर्गेनाइजेशंस के नाम पर निचले वर्ग को ताकतवर बनाया हो, या FPO के माध्यम से किसानों को एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म दिया हो। इन तीनों बातों के साथ हमारी स्कीम हमेशा लगातार उनके साथ चलती है। लेकिन जब बात आती है डिजिटलाइजेशन की, तो दुनिया ने माना कि हमारे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो गाँव में है, जिनके पास में मार्केटिंग की पावर नहीं है, लेकिन उनकी पैकेजिंग, उनकी डिलीवरी का सिस्टम ने, डिजिटलाइजेशन के प्लेटफॉर्म ने उनको भारत से बाहर भी अपनी पहचान दी है। और उसका परिणाम है कि एक गांव में बैठा हुआ व्यक्ति भी अगर ठीक तरीके से अपने पैरामीटर्स को लिखता है, अपने एड्रेस को देता है, तो दुनिया के सामने इस तकनीक का लाभ मिला है जो शायद बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वर्षों में नहीं कर सकें। वो आज डिजिटलाइजेशन के कारण हमारे छोटे ग्रुप भी अपनी स्थान को बना रहे हैं। और इसलिए मैं मानता हूं कि चाहे हम मंत्रालय की स्कीम की बात करें, जब मैं PFME की बात करता हूं तो 2 लाख अगर उद्यमियों को हमें 5 साल के भीतर 10,000 करोड़ रुपए देकर तकनीक और पैसा दोनों देना है, तो मैं मानता हूं कि जो खाद्य प्रसंस्करण का क्षेत्र अनऑर्गेनाइज सेक्टर माना जाता है, वो एक ताकत के साथ ऑर्गेनाइज सेक्टर के तौर पर सामने खड़ा हो रहा है। और ये जो अवसर है 2017 का अनुभव लेते हुए 2023 के संकल्प के साथ कि हम इन पांचों स्तंभों में अपनी सफलतापूर्वक अपना मुकाम हासिल करेंगे, साथ में ये भी संकल्प को मजबूत करेंगे कि आने वाले समय में हम प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम को कर कर दुनिया में हम अपने स्थान को बनाएंगे। मुझे लगता है कि इतना कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और जो चीज़ें सबने मिलकर की हैं, हम इस 2023 के वर्ल्ड फूड फेस्ट में इसको साबित करके बताएंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। Thank you, sir. And now I request Honorable Union Minister for Food Processing Industries, Shri Pashupati Kumar Parasji, to give his keynote address. माननीय राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, सचिव श्रीमती अनीता परवीन जी, अपर महानिदेशक PIB श्रीमती मट्टू JP सिंह जी, अतिरिक्त सचिव मिनहाज आलम जी, फिक्की के उपाध्यक्ष हर्ष जी अग्रवाल जी, फिक्की के महानिदेशक श्री शैलेंद्र पाठक जी, भारत के राज्यों के रेजिडेंट कमिश्नर एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी, भारत में विदेशी दूतावासों के वरिष्ठ अधिकारी, फूड प्रोसेसिंग कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और बैठक में हमारे उपस्थित सभी विभाग के पदाधिकारीगण, अधिकारीगण और मीडिया के साथियों, आज की बैठक में उपस्थित होने के लिए मैं सभी साथियों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मीडिया सेंटर में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के कर्टेन रेजर कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आप सभी का मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारत विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में एक है,
जिसमें फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में निवेश के कई अवसर हैं। हम दूध, मिलेट्स और पशुधन के सबसे बड़े उत्पादक भी हैं और कुल खाद्य उत्पादन में दूसरे सबसे बड़े हैं। हाल के वर्षों में इस क्षेत्र ने उच्च विकास और उच्च लाभ भी देखा है। इस प्रकार हर साल विश्व खाद्य व्यापार में अपना योगदान बढ़ा रहा है। भारत 1.4 बिलियन लोगों का बड़ा बाजार के साथ सबसे तेज़ी से बढ़ती और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम कृषि खाद्य के सबसे बड़े उत्पादक हैं और बागवानी उत्पादनों में भी आगे हैं। भारत फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में विश्व की फूड बास्केट बनने की क्षमता रखता है। भारतीय फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र पिछले 5 वर्षों में 8.3% की औसत वार्षिक वृद्धि दर के साथ तेज़ी से बढ़ रहा है। यह पंजीकृत विनिर्माण क्षेत्र में कुल रोजगार का 12.2% है। भारत सरकार फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र की विशाल क्षमता के बारे में जागरूकता है तथा इस क्षेत्र के समग्र विकास पर बहुत जोर दे रहा है। मेरा मंत्रालय इस क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों के प्रति सचेत है और पूरी क्षमता के साथ इसके विकास को आगे बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म फूड प्रोसेसिंग उद्यम उन्नयन योजना जैसी योजनाओं को खेत से खुदरा बाजार तक कुशल आपूर्ति के प्रबंधन के साथ साथ आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए भारतीय ब्रांडों को मजबूत करने के लिए अनेक कार्य किया जा चुका है। मेरे मंत्रालय ने विश्व फूड प्रोसेसिंग जगत से निवेशकों, निर्माताओं, उत्पादकों, खाद्य प्रोसेसर, नीति निर्माताओं और संगठनों को एक साथ लाने के लिए वर्ल्ड फूड इंडिया 2017 का आयोजन किया गया था। वर्ल्ड फूड इंडिया 2017 ने फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में भारतीय बाजार में वर्ल्ड फूड इंडिया 2017 के लिए एक मंच प्रदान किया। आपको यह जानकर काफ़ी खुशी होगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 के अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में घोषित करने की दृष्टि से फूड प्रोसेसिंग उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार इस वर्ष के 20 राज्यों और 30 जिलों में मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष हम अपनी पिछली सफलता को आगे बढ़ाते हुए 3 से 5 नवंबर 2023 को प्रगति मैदान नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया के दूसरे संस्करण का आयोजन कर रहे हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फूड प्रोसेसिंग की बढ़ती मांग को पूरा करने में भारतीय फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र की क्षमता को दर्शाने के लिए एक विश्व स्तरीय मंच प्रदान किया जाएगा। फूड प्रोसेसिंग उद्योग मंत्रालय इस आयोजन को भव्य रूप से सफल बनाने के लिए सभी हितधारकों और भागीदारी को सहयोग से अनुरोध करता है। पिछले महीने 20 से 24 फरवरी के बीच गल्फ फूड 2023 में शामिल होने के लिए मंत्रालय की टीम के साथ मैं दुबई गया था। वहां मैंने एपीडा के स्टॉल का उद्घाटन भी किया और फूड प्रोसेसिंग से संबंधित विभिन्न स्टॉल का निरीक्षण भी किया। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र के उद्योगपतियों के साथ बातचीत भी की और उन्हें 3 से 5 नवंबर 2023 के लिए विशेष रूप से भारत आने के लिए आमंत्रित भी किया। इसके अलावा यूएनए के विदेश व्यापार मंत्री के साथ बैठक की और उन्हें अधिक संख्या में उद्योगपतियों को वर्ल्ड फूड इंडिया में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया। साथियों, इसके अलावा 28 फरवरी 2023 को मिलेट्स महोत्सव जो बिहार में है आयोजित किया गया था। मैं मिलेट्स के उत्पादन और प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए किसानों और उद्योगपतियों के साथ बैठक की तथा फूड प्रोसेसिंग से संबंधित स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। वहां लोगों से आग्रह किया कि मिलेट्स के उत्पादन एवं प्रोसेसिंग को बढ़ावा दें तथा अधिक से अधिक संख्या में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में शामिल भी हों। हम इस आयोजन को सफल बनाने के लिए देश और विदेश में बड़े व्यापारी, विदेशी दूतावासों, विदेशों में भारतीय दूतावासों, राज्य सरकारों आदि के साथ जुड़ रहे हैं। हम वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में भाग लेने और विश्व खाद्य जगत में योगदान करने के लिए आप सभी को आमंत्रित भी करते हैं। मैं कर्टेन रेजर के इस कार्यक्रम में आने के लिए पुनः सभी दलों को
हार्दिक दिल से मैं बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir. And now I request Mr. Minaj Alam, Additional Secretary, to give a vote of thanks. Honorable Union Minister of Food Processing Industries, Shri Pashupati Kumar Paras ji, Honorable Minister of State, Shri Prahlad Singh Patel ji, Respected Secretary, Madam Neeta Parveen, all the distinguished dignitaries present here today. It has been a matter of great honor and pleasure to be part of this curtain raiser event. On behalf of me and my colleagues at this ministry, I would like to extend a heartfelt vote of thanks to everyone who has contributed to the success of this event. First and foremost, I would like to thank our esteemed guests for taking the time out of their busy schedules to be part of this curtain raiser event. Your thoughts and inputs for the event have truly enriched our ongoing preparations for the upcoming mega event. I would like to thank our investment partner, event partner, knowledge partner for support to ensure that this event runs smoothly. Last but not least, I would like to thank each and every one of you for being a part of this event. Your presence here today has made a significant contribution to the success of this curtain raiser event. I hope this event will be a stepping stone to the grand success of the upcoming World Food Event 2023. Thank you everybody. Thank you, Mr. Alam, and thank you, sir. With this, we come to close of this curtain raiser event. I would request all my media friends to please proceed to the 4th floor for the refreshments which have been specially arranged as already specified by Honorable Secretary Ma'am also. There are millets in it, so please enjoy them and be a part of this World Food Program, which is going to happen from 3 to 5th November. Yeah. Can we happen on the other occasion? ठीक है बाद में करूँ. Thank you, sir. Thank you.